उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्ष के होश उड़ा दिए। ये बात तो किसी से नहीं छिपी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हर मुद्दे पर अपनी बात बड़ी ही निडरता से रखते हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में जो है लोगों के सामने अपनी बात को वो रखते आते हैं। इस बीच अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा है संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए कुछ शब्दों को लेकर, और इसे ही अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से अब जोड़ा जा रहा है। इसे साफ समझ आ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष और आज आप कह सकते हैं कि ऐसे समाजवाद जैसे जो ऐसे शब्द हैं जिसे जोड़ा गया था संविधान में और जिसे लेकर अब आरएसएस के एक नेता ने बयान दिया है, अब उसका वो समर्थन कर रहे हैं। आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कह दिया है, क्यों इसे आरएसएस के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है और उसे इसका समर्थन बताया जा रहा है, विस्तार से समझिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वो बीज है जिस पर यह दस्तावेज विकसित होता है। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी अन्य देश के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि बदलाव जो है नासूर की तरह है, इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ कहते हैं कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। पीआर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाते समय उस पर कड़ी मेहनत की थी और उन्होंने निश्चित रूप से मूल प्रस्तावना पर ध्यान केंद्रित किया होगा। क्या कुछ और कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का, सुनिए। And therefore, friends, when we have Amrit Kal, when we have 75th commemoration of adoption of Indian Constitution, we have 75th year of our Republic also, that is started on 26th January 1950. These are propitious times for all of us to engage in discourse, dialogue, debate upon the essence and spirit of the Indian Constitution, a document that defines our democracy. I need to reflect, friends, on some issues that need to agitate public minds, catalyze national discourse so that we get much needed corrective path. It is much needed, I emphasize. The preamble of any constitution is its soul. The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we the people of India. And friends, except Bharat, nobody's constitution's preamble has undergone change. And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which Constitution has grown. Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. But this preamble for Bharat was changed by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, adding words socialist, secular and integrity. We must reflect. Dr. Ambedkar did painstakingly work. He would have surely focused on it. Founding fathers thought it befittingly wise to give us that preamble. No country's preamble has undergone change except Bharat. But devastatingly, this change was effected for Bharat at a time when people were virtually enslaved. We the people, the ultimate fountain of power. The best of them were languishing in jails. They were denied access to judicial system. I am referring the 22 months of draconian emergency that was proclaimed on 25th June 1975.
So what a travesty of justice. First we change something which is not changeable, alterable. Something that emanates from we the people. And then you change it during emergency. Where we the people were bleeding in heart, in soul. They were in darkness. Forgetting that it was painstaking work for about 3 years. To be precise, 2 years, 11 months and 18 days. When Dr. Ambedkar and his team worked hard, looked all around the planet, looked at our civilizational history of 5,000 years. During emergency, the darkest period of Indian democracy, when people were behind the bars, fundamental rights were suspended. In the name of those we the people who were enslaved, we just go for what? Just flourish of words? It is to be deprecated beyond words. In Keshavanand Bharati, as I reflected, versus the state of Kerala, 1973, 13 judge bench. The judges focused and deeply reflected on preamble of the Constitution. The celebrated judge, Justice H.R. Khanna, I quote, "The preamble serves as a guide to the interpretation of the Constitution and indicates the source from which the Constitution derives its authority, namely the people of India." Unquote. We are changing the soul of the Constitution. We are, as a matter of fact, by these flash of words added during darkest period of Constitution emergency, darkest period for the Constitution of the country. And in the process, if you deeply reflect, we are giving wings to existential challenges. These words have been added as Nasur. These words will create upheaval. Addition of these words in the preamble during emergency signal betrayal of the mindset of the framers of the Constitution. It is nothing but belittling the civilizational wealth and knowledge of this country for thousands of years. जैसे कि आपने उनका बयान सुना, ये बयान जगदीप धनखड़ की ओर से पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान दी गई और ये एक ऐसे समय में आई है जब आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया। आरएसएस ने कहा था कि इसे आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये दोनों शब्द कभी भी बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। जगदीप धनखड़ ने भी अब इसी बात को दोहराकर कहीं ना कहीं इस बयान का समर्थन कर दिया। जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर था, जब लोग सलाखों के पीछे थे, मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे और यहाँ तक कि प्रस्तावना में शब्दों का तड़का लगाया गया था। इसे शब्दों से परे निंदनीय माना जाना चाहिए। हम अस्तित्वगत चुनौतियों को पंख दे रहे हैं। आपातकाल के दौरान इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ना संविधान निर्माताओं की सोच के साथ विश्वासघात को दर्शाता है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने आह्वान किया था कि इन मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने इसे राजनीतिक अवसरवाद और संविधान की आत्मा पर जानबूझ किया गया हमला करार दिया था।
हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उनके इस बयान की आलोचना की, लेकिन अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ये बड़ा बयान देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि बी आर अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया था उस संविधान में इन शब्दों की जगह नहीं थी। इसे तो इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था, यह अवसरवाद की राजनीति थी और इस पर सच में विचार करने की जरूरत है। जिन शब्दों को बाद में जोड़ा गया, जो शब्द कभी संविधान का हिस्सा ही नहीं थे, तो आखिर उन शब्दों को हटाने या उस पर चर्चा करने को लेकर संविधान की पत्रियां दिखाकर संविधान के लिए जो है नारे क्यों लगाए जाते हैं, उस पर हमला क्यों बताया जाता है। तो इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह के जो है रिएक्शंस दे रहे हैं और एक बार फिर से जगदीप धनखड़ की तारीफ की जा रही है कि वो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से हर पहलू को जो है लोगों को अवगत कराने का काम करते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान भी सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।